Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Manthan Taylor and I welcome you all to another tutorial video on quantum GIS. So friends, today we shall be exploring few more geometry tools for which I have this polygon. अब ये polygon जो है basically एक छोटी सी forest range है, hypothetical एक polygon मैंने create किया है and for clarity की base map हम इसके अंदर add कर देते हैं. So I would take Google satellite hybrid. तो दैट विल गिव मी द नेम ऑफ द प्लेस एज वेल। तो ये हिमालय फुटहिल्स उत्तराखंड का एक पौड़ी गढ़वाल के पास का एक छोटा सा रेंज है। नाउ इन दिस केस टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ टूल्स दैट वी वुड यूज, मैं सबसे पहले चीज आपको बता दूं कि इसका जो सीआरएस है, जो हमारा कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम है, दैट इज ज्योग्राफिक इन नेचर। तो इसको मैंने प्रोजेक्टेड में नहीं पर ज्योग्राफिक सीआरएस में किया है। अब द थिंग विद दिस इज कि ये जो रेंज है वो रेंज बनी है अलग-अलग पोल्स के लोकेशन से, और उस केस में लेट अस जस्ट चेक कि वो जो पोल्स हैं वो यहाँ पे हमें एज नोड दिखेंगे व्हेन आई सिलेक्ट। तो ये जो आप प्लस मार्क या क्रॉस मार्क्स देख रहे हैं, बेसिकली दोज आर द पॉइंट्स और द नोड्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच दिस पॉलीगन इज क्रिएटेड। नाउ द थिंग इज, हमें चाहिए कि ये जो है हर दो पोल्स के बीच में बिल्कुल सेंटर में और एक पोल हमें ऐड करना है। दैट इज वन थिंग दैट वी आर विलिंग टू डू। So first thing that I would do is I would go to vector geometry tool and would select this tool densify by count. Then click on this, वो पूछेगा कितने vertices to be add. This vertices are basically the nodes. तो यहाँ पे मुझे हर दो नोड के बीच में एक नोड चाहिए. I would keep it one and click on run. It will give me densified another polygon, and just to check whether it has done the job or not, हम इसको select करेंगे and you would be able to see that precisely हर दो नोड के बीच में एक नोड या हर दो वर्टाइसेस के बीच में एक वर्टेक्स ऐड किया गया है। सो दिस सर्व्स द पर्पस। हमने एक एक पोल्स ऐड कर दिए हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आई वांट द प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ दिस पोल्स। तो उसके लिए मुझे इस जो पॉलीगन है, ये पॉलीगन के जो वर्टाइसेस है, आई वांट टू extract the vertices from this polygon, for which we have an option in this tool as extract vertices, and I'm using the input layer as densified, जिसमें मैंने additionally एक एक पोल दो पोल्स के बीच में डाला है। Click on run and close. So now it has extracted the vertices, और अब मुझे क्या है, I want to know the exact latitude and longitude and for documentation purpose कि हर एक जो पॉइंट है उसका लेट लॉन्ग का वैल्यू मुझे चाहिए। So I would open the attribute table and I could see that these two properties, ये जो आपका polygon था उसी का दो properties है, and it will remain the same for all the vertices. This vertex index, basically it starts from 0 and ends up to the n minus 1, that is 78. So total we have 79 vertices. अब the next part is I want the latitude and longitude values, और जिसको मैं बाद में CSV में या Excel sheet में convert करना चाहूँगा, and I would keep a document of the same against the vertex index. I can also modify the vertex index. I can make it start from 1 as well. तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, टॉगल एडिटिंग ऑन करना है। वन थिंग यू हैव टू मेक इट वेरी श्योर कि ये जो आप पॉलीगन यूज कर रहे हैं, जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं, इट शुड बी इन ज्योग्राफिक सीआरएस। यहाँ पे मैंने लिया है EPSG 4326, दैट इज WGS 84। प्रोजेक्ट सीआरएस शुड आल्सो बी द सेम। नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट टेबल में जाते हैं एंड फील्ड कैलकुलेटर जो है इसको टॉगल एडिटिंग ऑन करके क्लिक ऑन द फील्ड कैलकुलेटर, and here I'm creating two new fields, latitude and longitude. So I'm writing lat. This number should be a decimal number and real number with a precision of 6 numbers after the decimal. So यहाँ पे I would add y, that is the y value, and would write geometry with a dollar mark, and then it would give me the output view. So this is for the one value or one particular vertex. ये जो मैं यहाँ पे एक क्वेरी डाल रहा हूँ या फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसका आउटपुट क्या आएगा वो यहाँ पे दिखा रहा है, एंड क्लिक ऑन ओके। It would add the latitude values of all the vertex. Similarly, I would also want the x field or x geometry, that is the longitude, and I would also create another field long. Again, it would be the decimal number with a precision of 6 digits, and I would write x,
and dollar geometry. You can also search this in this part, or you can also search by typing geometry. So here you would get the function. यहाँ पे output preview जो है वो valid है, all other things are fine, and I click on OK. So it would give me the longitude and latitude, both the values for each of the vertex that I have in my canvas or in my attribute field. I will click on save, toggle editing off, and now I won't be needing this attribute table. Next part is I want this to be documented, और उसके लिए मुझे Microsoft Excel में इसको modify करने की या data fields change करने की जरूरत पड़ सकती है. So for that I would right click on this layer, export, save feature as. Because I have performed this operation, by default यहाँ पे CSV comma separated values है, otherwise either it would be geo package or S3 shapefile. You select comma separated values, file name, and I'm pasting it my desktop with the name, say vertices let long, and here it is .csv. Click on save. CRS यहाँ पे अगर कुछ भी रह रहा है for now, if in case you want to go for further documentation, तो CRS कुछ भी रहे, यहाँ ज़्यादा उसका दिक्कत होगा नहीं. And click on OK. And then I would like to check whether I can access it or not. So quickly I'm opening the file. It opens with the Microsoft Excel. यहाँ पे read only notify जो issue है, you don't have to worry. You can click on read only. And here you may see that it is giving the lat long value, and now against each of the vertex index, so you can modify. I can start with 1, 2, 3, 4, and so on. I have got the lat long value which can be used for further documentation purpose. So we can extract vertices from the line feature, the polygon feature, and we can also add the lat long to each of the vertices by the field calculator that is available in the your attribute table. So that was all for this tools as of now, and we'll explore a few more features in the next tutorial video. So have a good time. Goodbye. Thank you.